Hello everyone, welcome to Chem-crystal. तो आज हम स्टार्ट करिबा सॉल्यूशन चैप्टर 2 एंड 3 मार्क क्वेश्चन आंसर माने तम मानक जो सिलेक्शन दिया जाइथिला सेतरे जो 2 एंड 3 मार्क क्वेश्चन थिला सॉल्यूशन चैप्टर रो तार आंसर गुड आज हम डिस्कशन करिबा वन बाय वन। ठीक अछि, चलो देरी न करी हम स्टार्ट करिबा। ठीक अछि, गोटे थोर ओवरलुक कर दियो। ये थिला तमरो सॉल्यूशन जो थरे के हमें सब 2 एंड 3 मार्क रो सब इंपोर्टेंट सब देइथिले। तो चलो गोटे पर गोटे आम स्टार्ट करिया। ठीक अच्छे, तो फास्ट क्वेश्चन थिला कौन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज हायर दैन द नॉर्मल वाटर। तो नॉर्मल वाटर जो बॉइलिंग पॉइंट थाए ताठार सी वाटर रो बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक थाए। कौन पाई रीजन पचरा जाइए। ठीक अच्छे, तो मुझे प्रथम यार आंसर लिखुची तापर तुम मानू बुझेदेवी। ठीक अच्छे, देख यार आंसर हम सी वाटर बॉइल्स एट higher temperature. भाव समस्त क्लीयरली विजिबल हो जहाँ लिखुची। ठीक अच्छे, सी वाटर बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन नॉर्मल वाटर। This is because seawater contains many dissolved solutes. So it has lower vapor pressure. So it has lower vapor pressure than pure water. In order to reach at the atmospheric pressure, the solution need to be heated to higher temperature. अच्छी ताले कौन लिखा है देख मु कहि दउछि। ताले लिखा है तो सी वाटर बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर दैन नॉर्मल वाटर। ताले जो नॉर्मल वाटर ठारो सी वाटर को बॉइल हवा पे बहुत समय बहुत टेम्परेचर दरकार। काहे कि माने ए जो जिंसटा ऊपर क्वेश्चन दिया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर हायर दैन नॉर्मल, सेटा को मु ए भला लिखिली। ताले कौन पई, बिकॉज कारण सी वाटर कंटेन्स मेनी डिजॉल्व सॉल्यूट्स है। ताले कौन अच्छी पाखे बहुत सारा सॉल्यूट डिजॉल्व होइक अच्छी। ठीक अच्छे, माने जो सी वाटर रे आम सी वाटर नॉर्मली हमको लुणिया लगे कहीं ना से बहुत सारा सॉल्यूट मिसिक अच्छी, सॉल्ट मिसिक अच्छी। जेहेतु एत सारा सॉल्ट मिसिक अच्छी तेणु कौन तार भेपर प्रेसरटा लो होइक थाए। ठीक अच्छे, तेणु कौन हुए ना तार भेपर प्रेसर लो होइक थाए। तेणु सी कौन करे जितेबाला सी चाहूँगी जे मु आटमोस्फेरिक प्रेसर को पहुँचापी तार से कौन ताको अधिक हिट दरकार, अधिक टेम्परेचर दरकार। तेणु जदि से अधिक हिट पाइब ताहले जाकि से कौन आटमोस्फेरिक टेम्परेचर आटमोस्फेरिक प्रेसर को सी पहुँच पार। तेणु से कौन है ताको अधिक टेम्परेचर दरकार है आउ से सी वाटर रो बॉइलिंग पॉइंट टिके अधिक। ठीक अच्छे, बुझा पाइला ये क्वेश्चन टा। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे आमर कौन ना आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ताले प्रथम आम लिखिया कौन ना आइडियल सॉल्यूशन विषय लिखिया। प्रथम आम लिखिया आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन प्रथम जानिबा तापर आम नॉन आइडियल को जिबा। ठीक अच्छे, चलो देखिया ताले आइडियल सॉल्यूशन टा आमर कौन ना ए सॉल्यूशन containing two components A and B is said to be ideal if
the force of attraction, if the force of attraction between, if the force of attraction between AA and BB are same as as that between between A ଆଉ B, A B, ठीक अच्छे। ताहले कौन है ना जदि आइडियल सॉल्यूशन आम क्या कहवा ना जो सॉल्यूशन ए मन कर गोटे सॉल्यूशन नहीं गले जो थे कौन दीटा कंपोनेंट अच्छी गोटे अच्छी ए आउ गोटे अच्छी बी दीटा कंपोनेंट आउ दीटा को आम जब आइडियल केते कहवा ना जदि से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या भितर ना ए माने आम जो मलिक्यूल नौचे तो आम कौन गोटे मलिक्यूल नौचे कि गोटे ना बहुत सारा नहीं तो बहुत सारा भितर ए आउ ए भितर जो अट्रैक्शन थी सेटा आ बी भितर भी अट्रैक्शन आउ ए आउ बी भितर अट्रैक्शन ठीक अच्छे। ये तीन जन भितर जो जो अट्रैक्शन या भितर जी अट्रैक्शन रहा भितर से अट्रैक्शन या भितर भी से अट्रैक्शन रहा आइडियल कहना ठीक अच्छे। जेहेतु एम पाखे सेम परिमाणर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रोचे ताहले से आम कौन करछे एम कहे कौन ना आइडियल सॉल्यूशन ठीक अच्छे। आइडियल सॉल्यूशन हवापाई भी आहरी किसी जिनस दरकार ठीक अच्छे। मुझे जगह लिखिदे ये लिखई दूसरी ये लिखिदे ठीक अच्छे। खाली आइडियल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गले होनी कौन यार किसी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी। तो फास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन तार फास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है they obey Raoult's law, they obey Raoult's law ना से माने ओबे करिए काकू राउट्स लॉ को। सेकंड पॉइंट कौन आसीबो ना एलएच मिक्स हमर आसीबो जीरो संगे समान हबो माने कौन देयर इज नो हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब ये जो जते बेले रिएक्शन होची से टाइम रे बा मिक्सिंग होची सेते बेले कोन होची ना कोनोसी हीट बाहरिबो ना कोनोसी हीट अब्जॉर्ब हबो ठीक अछि। थर्ड पॉइंट कौन डेल भी मिक्स भी जीरो हम माने कौन जिते बड़े मिक्सिंग बेले तुमर ना कौन सी वॉल्यूम बढ़ ना कौन सी वॉल्यूम कम माने वॉल्यूम सदा कांस्टेंट रहिबो ठीक अच्छे। ताले तीन टा जिंस ओबे होथिबा आ सेमानकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि समान थिबो ताले कौन हबो ताको हम कहया गोटे कौन आइडियल सॉल्यूशन ठीक अच्छे। एबे आइडियल गला तापर देखिए हमें नॉन आइडियल कौन ठीक अच्छे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सेम जिनस कौन ना से भाया दुटा कंपोनेंट नवा गोटे नवा ए एंड बी मुझे लिखी थे तेणु आउ थे लिखुनी है किंतु जदि आम देखा जो आम लिखी इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए आउ कौन बी बी इज नॉट इक्वल टू दैट बिटवीन क्या भितर बिटवीन ए बी ठीक अच्छे। माने ए आउ ए भितर अट्रैक्शन जी बी भितर अट्रैक्शन जी सेटा कौन क्या संगे सामान हम ना ए आउ बी संगे सामान हम ना ये सामान हो जाता तेणु आम कहते कौन आइडियल सॉल्यूशन एटे कौन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेहेतु सामान नुह तेणु एक कहुए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तापर यार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रहिबो ना फास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबो ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करिबो नाही राउल्ट्स लॉ को ओबे करिबो नाही डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। सेकेंड पॉइंट कौन ना तुम डेल एच मिक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो से कौन होता ना हिट बाहर ना हिट अब्जर्व ये जिन हो नाला कि आइदर हिट बाहर ना हिट अब्जर्व हम या सागर कौन ना ट्रिपल आई नेक्स्ट पॉइंट कौन थी ना डेल भी मिक्स भी नॉट इक्वल्स टू जीरो ठीक अच्छे। ताहले यही जदि तीन टा कैरेक्टरिस्टिक्स रही यही जब पॉइंट आसो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम ताले ये जिन तुम भल भाव में भाव लिखिपर ठीक अच्छे। ताले कौन ए आइडियल आइडियल जानले केम कौन नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना हेनरीज लॉ ताले देखा हेनरीज लॉ कौन कही हेनरीज लॉ देखा कौन है ना द लॉ बा द हेनरीज लॉ states that Henry's law states that the solubility
the solubility of a gas, the solubility of a gas in a solvent, at constant temperature, is directly, a solvent at constant temperature is directly proportional to, the pressure of the gas, to the pressure of the gas. ठीक अच्छे ताले कौन दिया ना तुम हेनरीज लॉ कहले कौन ना सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, गोटे गैस रो सॉल्युबिलिटी केते बेले ना इन ए सॉल्वेंट, गोटे सॉल्वेंट भितर जतले थिला बेले बा सॉल्वेंट रे जतले मिसुजी तार सॉल्युबिलिटी कोन होची, सेही सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट टेम्परेचर टाइम रे जते बेले कि टेम्परेचर कांस्टेंट थियो सेति सेही समय रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने ता संगे रे प्राय तो समान माने ये जति तमरो प्रेशर कहाँ संगे फास्ट देखिदा कहाँ संगे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, माने प्रेशर ऑफ गैस जदि बढ़िबो सॉल्युबिलिटी भी बढ़िबो, जदि प्रेशर ऑफ गैस कमिबो सॉल्युबिलिटी भी कमिबो केते बेले ना कांस्टेंट टेम्परेचर थिबा बेले। ठीक अछि ताले कोन हला ताले एथरो हम जाइले कोन जदि सॉल्युबिलिटी को लिखिबी कैपिटल एस आ तमरो प्रेशर को लिखि देबी पी ताले ए जन भितरे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रहिबो। आ जदि प्रोपोर्शनलिटी उठेबी ताले रहिबो कोन एस इक्वल्स टू KHP, ए KHP टा कोन ना हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक अछि बुझियला एटा थिला तमर कोन हेनरीज लॉ थिबो। ताले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन जिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छी ना लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स तुमको कहि देबी कोन कोन केमती तुम आउडो मु या पई वीडियो भी करबी जो थरे कि तुम पई प्रॉब्लम्स कोन कोन आसी परिबो केमिति आसी परिबो से विषय रे लिखा हितबो। ठीक अछि किंतु आमे भी जानिबा कोन हमरो ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कोन। ठीक अछि चलो ताले प्रथमे हमें लिखिया कोन ऑस्मोटिक प्रेशर कहले कोन बुझछ। ताले प्रथमे ऑस्मोटिक प्रेशर कोन लिखिबा, ऑस्मोटिक प्रेशर ताले it is defined as the excess, it is defined as the excess pressure which must be applied, in the solution, side, in order to prevent, the flow of, solvent molecules, through SPM, semi permeable membrane। ठीक अछि ताले कोन हला ना इन the excess pressure which must be applied in the solution side in order to prevent the flow। अच्छा देखो कोन हला ना गोटे एई भलिया जिंस अछि। ठीक अछि एठे गोटे छोट बाट अछि, ए बाट रे कोन दिछे हम गोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दे दिछे। ठीक अछि एपटे कोन छै ना प्योर लिक्विड अछि, एपटे गोटे सॉल्यूशन अछि, सॉल्यूशन माने कोन सॉल्ट भी अछि सॉल्वेंट भी अछि किंतु एठे कोन प्योर सॉल्वेंट अछि। ताले कोन हबो ना तमरो जो सॉल्वेंट अछि एई भलिया बोही चलो एपटु को याडे पास हो ताले हम कोन करिया ना एपट से गोटे प्रेशर दवा, जेनी प्रेशर देले एमिति प्रेशर दवा जेमिति कि कोन हबो ना एपटु आउ एई फ्लोटा हबो नाही। ठीक अछि ए प्रिवेंट करिवे फ्लो को, ए जेतिक परिमाण हम एठी प्रेशर देले सेई प्रेशर टाको हम कोन कहबा ना ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक अछि
गोटे ये तो अच्छे आमर कौन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माने है जे जो थे केवल सल्भेंट जापर माने पानी सागर लुण मिसाई ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल पानी जापर लुण जापर ना ठीक अच्छे एपटे आमर खाली पानी अच्छी एपटे कौन अच्छी ना सल्यूशन माने लुण प्लस पानी ताले कौन हो ना एठू पानी गुड़िक लुण पानी भितर को आसुथिबो ठीक अच्छे आमे कौन करिया लुण पानी जोटी अच्छी से पटे कौन करिया गोटे प्रेसर दवा प्रेसर देले कौन हम ना जो पानी गुड़ा आउ एक्सेस एपटू पलि आसला सी आसब ना जो आसब ना ताले कौन हम ना ये जो प्रेसर टाक अप्लाई कले प्रेसर को आम कह कौन ना आम कह एक ऑस्मोटिक प्रेसर ठीक अच्छे ताले यहाँ था आमर कौन ऑस्मोटिक प्रेसर डेफिनेशन तो आम ए जाना कौन ना ये जो ऑस्मोटिक प्रेसर विभिन्न प्रकार लॉ अच्छी है से लॉ को लेकिन ऑस्मोटिक प्रेसर गोटे डेरिवेशन भी करवा ठीक अच्छे चलो फास्ट स्टार्ट करिया तो फास्ट लॉ आसूची कौन ना बॉयल Van't बॉयल भैंट हॉप HOFF Van't लॉ ठीक अच्छे फास्ट लॉ अच्छा बॉयल्स लॉ जानी बॉयल्स लॉ जहाँ ये हूँ से ठीक अच्छे खाली एथरे टिके अलग है भैंट फैक्टर को आड कराई लिखाई बुझी देखिए चलो कौन लॉटा ना लॉ हूँ तुम टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर द टेम्परेचर remaining the temperature remaining constant जेतेबेले टेम्परेचर constant थिबो the osmotic pressure of a dilute the osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to the concentration of solution ठीक अच्छे ताले कौन जो टेम्परेचरटा कन्स्टाट अच्छे से टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या सागर प्रोपोर्शनल हम ना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जदि ऑस्मोटिक प्रेशर को मुझे लिखी पाए ऑस्मोटिक प्रेशर को पाए बोले लिखा जाए ठीक अच्छे पाए कौन हम ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कौन सागर ना कंसंट्रेशन माने सी सागर ठीक अच्छे ये थिला तुम कौन फास्ट लॉ एबे जबा सेकंड लॉ देखिए कौन अच्छे आ गोटे पेज को जाऊँ सेकंड लॉ माने बी रे तो बॉयल्स लॉ पर कौन थिला से गैसियस लॉ रे पड़थिबो चार्ल्स लॉ तो चार्ल्स लॉ नेक्स्ट होच कोन चार्ल्स लॉ CHARLE चार्ल Van't Hoff लॉ तो चार्ल Van't Hoff लॉ हम कौन कहला देखिया ना कंसंट्रेशन रिमेनिंग कांस्टेंट सेतल टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट थिला एठे कोन कंसंट्रेशन रिमेनिंग कांस्टेंट और ये कांस्टेंट कौन अच्छी ना कंसंट्रेशन तो ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to the absolute temperature is directly proportional to the absolute temperature ताले कौन है जो कंसंट्रेशन टा तुम कांस्टेंट अच्छे से टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाए आकार लिखुचे आ संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर माने टेम्परेचर इन केल्विन माने टी ताहले पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हे गला ताने फास्ट रे पड़थिले कोन ना हम पड़थिले पाए संगे कहा संगे समान नहीं थिला ना देखि दियो पाए एठी तुम एठी पाए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एबे मिल गला कोन पाए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ताले नेक्स्ट लॉ आसीओ Van't Hoff लॉ Van't Hoff इक्वेशन Van't Hoff इक्वेशन कौन आसला
ना आम फास्ट आम जान कौन ना पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ठीक अच्छे ताले कौन हम जब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी ताले मुझे लिखिपारि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड सी इंटू टी ताले इम्प्लाइज दैट प्रोपोर्शनलिटी उठेदा प्रोपोर्शनलिटी उठे देकी मुझे देदेवी कौन ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कौन ना आर सी टी एमती लिखिपारि पाई इक्वल्स टू सी आर टी ठीक अच्छे चलो किसी असुविधा अच्छी कि अच्छा ये जो सी अच्छी कंसंट्रेशन को आम लिखिपर नंबर ऑफ वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ताले मुझे लिखिपारि पाई इक्वल्स टू यहाँ तुम फॉर्मूला ठीक अच्छे यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू सीआरटी है मुझे डिराइव कर पाई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय वी आर टी कहीं आम प्रोब्लेम्स करार अच्छे तो से देखा है भि टाइप आनी कौन हो ना पाए भि इक्वल्स टू एन आर टी बुझी हो तो ना बुझी होनी ठीक अच्छे अच्छा आउ गोटे जिन देख ये जो एन टा केमी बाहर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल केमी बाहर मन अच्छे ना नहीं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ताले मुझे लिखिपारि implies that pi v equals to given mass divided by molecular mass into RT बुझी होछि तो ये सब फॉर्मूला को तो मन रखि बहुत इंपोर्टेंट दरकार रे आसीबो अछि एटा होछ हमर एटा ए जिंसटा होछ हमर कोन ना जोटा डिराइवेशनटा हमर ऑस्मोटिक प्रेशर किंतु एतो जिंस तमर प्रॉब्लम रे आसीबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कौन ना एजियोट्रोप एजियोट्रोप कौन आम देखिए एजियोट्रोप तुम सर्ट नोट्स आकार पड़ी था सर्ट नोट्स तुम मे बी आसे कौन लंग क्वेश्चन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्ट नोट्स आसे बेले बेले भी तुमको ये डायरेक्ट 3 मार्किया पचार दी तीन टा सर्ट नोट्स आकार ठीक अच्छे एजियोट्रोप कौन आम डिफाइन कर इट इज द एजियोट्रोप कौन इट इज द एजियोट्रोप इज द liquid mixture azeotrope is the liquid mixture that boils at constant temperature like pure liquid without changing that boils at constant temperature like pure liquid without changing the composition ठीक अच्छे मन कर गोटे एग्जांपल नहीं जा ठीक अच्छे मु मन कर नेली गोटे कौन ना बेंजीन आउटे नेली मन कर इथर ठीक अच्छे मन कर प्योर बेंजीन रो गोटे बॉइलिंग पॉइंट अच्छे माने लेट बॉइलिंग पॉइंट एक्स ठीक अच्छे सेतले आम जाचे बेंजीन आउ इथर को मिसई देवी एमानकर बॉइलिंग पॉइंट केभे भी इक्वल हेनी क्या एक्स हेनी किंतु कौन है ना ये जो बेंजीन आउ आमर इथेनॉल मिक्सचरटा ये मे भी इक्वल होगला कहाँ सांगे ये मे भी इक्वल होगला एक्स सांगे आउ यार कंपोजिशन भी किसी भी परिवर्तन है ना आम जाने कौन आउ थे कहीदेव शुण आम जाचे जे जदि तुम खाली पानी नौच ताकू गरम करने को जी समय लगे से लुण मिसेदेले गरम करने को अधिक समय लगे किंतु कौन हो लुण पानी को गरम करने को जदि सेम टाइम लगे जी तुम पानी गरम करने को लगे ताहले ताकू आम कह एजियोट्रोप आम ये लुण पानी कहले लुण गोटे सॉलिड आउ यहाँ गोटे लिक्विड किंतु ये कौन लिक्विड मिक्सचर नहीं ठीक अच्छे ये लिक्विड मिक्सचर नब ताकू जो बॉयल कर प्योर लिक्विड सांगे तार टेम्परेचरटा सामान हम माने जी से टेम्परेचर बॉयल हुए एठे भी से टेम्परेचर बॉयल हम ताले आम ताकू कहे कौन एजियोट्रोप ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना आइसोटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन आम देखिए पेयर ऑफ सॉल्यूशंस
pair of solutions having having same osmotic pressure are called isotonic solution. ठीक अच्छे ताले कौन लिखा है माने दीटा सॉल्यूशन अच्छी दीटा सॉल्यूशन रा जति ऑस्मोटिक प्रेशर टा समान रहिबो ताले दीटा पेयर ऑफ सॉल्यूशन दीटा पेयर माने दीटा दीटा सॉल्यूशन रा जति ऑस्मोटिक प्रेशर समान रहिबो ताको हम कहे कोन आइसोटोनिक सॉल्यूशन यार एग्जांपल होची जे तमे एग्जांपल नबो 1 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन 1 मोलार 1 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन यार कहा संगे समान हबो ना 1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन गोटे मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन गोटे मोलार यूरिया सॉल्यूशन ना दी जनकर ऑस्मोटिक प्रेशर समान आसीबो तेणु ए दी जन कोन आइसोटोनिक सॉल्यूशन ठीक अछि बुझियला मने रहइबो तापर नेक्स्ट देखिया नेक्स्ट अछि कोन ना इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट ये बहुत इंपोर्टेंट जिंस आ एटा तमरो बारंबार आसुची तेणु मने रख ठीक अछि इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट कोन देखिया ना इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट is defined as the elevation in boiling point of a solution containing 1 gram mole of 1 gram mole of solute 1 gram mole of solute in 1000 gram of solvent ठीक अच्छे ताले कौन देला ना एलिवेशन इन बॉइलिंग अच्छा तुम यही जो इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट तुम कोठी पाइबो ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रो जेतले डेरिवेशन करछो सेतिकी बेले इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट आसीबो ठीक अछि ताले इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन केमति करा जबो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जेतले बाहर करछो ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कौन कंटेन करछो ना 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट ताले सॉल्यूट केते अछि ना 1 ग्राम मोल अछि केते रे अछि ना 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट रे 1000 ग्राम सॉल्वेंट रे जेतले 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट थिबो ताको हम कहे कोन इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट ठीक अछि मने रखिबो बहुत इंपोर्टेंट जिंस बहुत थर एटा भी आसे ठीक अछि मने रखिबो नेक्स्ट जीवा रिवर्स ऑस्मोसिस ताले रिवर्स ऑस्मोसिस कोन देखिया ताले देखो लेख सब पॉइंट सब करी सब लेखु दिबो ठीक अछि रिवीजन करिया पे तुमको इजी हो ताले देखो कोन होछि रिवर्स ऑस्मोसिस हमें काहू कहबा ना इट इज द प्रोसेस in which solvent is made to flow from solution of higher concentration side to the solution of lower concentration side through the semi permeable membrane SPM लिखि दोछि semi permeable membrane अछि by application of
application of larger pressure than osmotic pressure in the solution side ठीक अच्छे ताहले ये कौन कहला देख भल भाव में कहूँ तुम भल भाव बुझ यहाँ आमर गोटे बिकर अच्छी ठीक अच्छे दीटा बिकर अच्छी है मझे ये जगह अच्छे ये जो जगह अच्छे ये आम कौन कले ना गोटे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ने देखा येलोटा यहाँ हूँ कौन आम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एसपीएम माने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ठीक अच्छे एपटे कौन अच्छी ना गोटे सॉल्यूशन अच्छी ये कौन ना हायर कंसंट्रेशन ठीक अच्छे एपट साइड गोटे सॉल्यूशन अच्छी दीपट साइड ये अच्छे कौन लोयर कंसंट्रेशन ठीक अच्छे आमर काम कौन आम जाचे जिते बड़े आमर थिला ये भाया एपटे थिला मनकर लुण पानी एपटे थिला खाली पानी तो खाली पानीटा लुण पानी आड़ को जाऊला खाली पानी माने लो कंसंट्रेशन ये थिला हाई कंसंट्रेशन ताले ऑस्मोसिस माने लोअर कंसंट्रेशन रो हायर कंसंट्रेशन को मूव करिवो ताले खाली पानीटा कौन जाऊला हाई एपट साइड को माने सॉरी लोअरटा जाऊला हायर आड़ को ताले आमे कौन कले एपटे प्रेशर ऐड कले जेतेले प्रेशर ऐड कले कौन हला ना ये जो मूव करतला ये आउ मूव करिला नाही ये जो मूव करियाटा ये बंद हो गला ताले ये जो प्रेशर अप्लाई करतले एको कहले कौन ना ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक अच्छे जितेबाला एको आम बंद करदेले एको कहले कौन ऑस्मोटिक प्रेशर ताले एबे कौन कहले ऑस्मोटिक प्रेशर ठारू किछि अधिक प्रेशर आहुरी हायर प्रेशर देले ठीक अच्छे जिते आहुरी अधिक प्रेशर देवे ताहले कौन करवा ना आमर ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ थिला सेतिकी प्रेशर जो अप्लाई कले आमर कौन है ना जिते आमर यहाँ जो कंसंट्रेशन जो मूव करता लोअर रू हायर आड़ को जाऊला यहाँ पूरा बंद हो जाता किंतु ताठू जो आहरी हायर करते कौन हम ना एपटू जो सल्यूशन था सी एपटू केपटू चलला सल्भेंट गुड़ा ठीक अच्छे माने उल्टा चलला आगुरी एपटू आसूला कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ठारू आहरी अधिक प्रेशर आम देले कौन है ना उल्टा मूव कला माने एटा ऑस्मोसिस रो उल्टा रे जाउची तेणु एकु कहला इतमे रिवर्स ऑस्मोसिस देखो इन होइचे सॉल्वेंट मेड टू फ्लो कोठी फ्लो करिवो ना फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन रो लोअर कंसंट्रेशन आड़को एई भलिया जदि मूव कला ताला आमे ताको कहया कोन ना रिवर्स ऑस्मोसिस माने ऑस्मोसिस रो उल्टा हमर कोन होता ना लोअर रो हायर को जाउतला जेटा बंद करके आमे कोन करले हायर रो लोअर आड़ को गले तेणु आकु कहला कोन रिवर्स ऑस्मोसिस बुझी हला नेक्स्ट बा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मु भाबुची ए क्वेश्चन ता तुम मान समस्त पढ़ी दियो बहुत भलो जिंस आ बहुत इजी जिंस आ सॉल्यूशन ना एटा गोटे सबठारु इंपोर्टेंट जिंस ठीक अछि ताले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोन पढ़िबा चलो द प्रॉपर्टीज of dilute solutions the properties of dilute solutions the properties of dilute solutions which depends upon the quantity depends upon the quantity of solute or number of quantity of solute or number of अच्छी or number of solute present or number of solute present in them the properties of a dilute solution which depends upon the quantities of solute or number of solute present in them but not on their nature, structure and characteristics
कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक अच्छे ताहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहले कौन बुझुचे आगे देख द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन गोटे डाइल्यूट सॉल्यूशन अच्छी तार प्रॉपर्टी कौन ना सी कौन कर तार प्रॉपर्टी गुड़ा डिपेंड कर डिपेंड कर ना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ठीक अच्छे मेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट माने कौन क्वांटिटी केते परिमाण अच्छी क्वांटिटी किंबा नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ऊपर डिपेंड करुच्ची ताले कौन ताले हमर जो प्रॉपर्टी रहिला से डिपेंड कला कहाँ ऊपर ना क्वांटिटी आउ नंबर ऑफ ठीक अच्छे क्वांटिटी किंबा नंबर ऑफ डिपेंड कर डिपेंड करनी कहाँ ऊपर ना नेचर आउ के ना स्ट्रक्चर आउ के ना कैरेक्टरिस्टिक्स ये तीनटा ऊपर डिपेंड करूना से डिपेंड कर केवल क्वांटिटी किंबा नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ऊपर ताले जति एई जिंस होउची ताहाले आमे ताको कहया गोटे कोन ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहिबा बुझियला ताले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन अच्छी ना देख कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गुड़ा हमर ना फास्ट हो कौन ना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ठीक अच्छे सेकेंड कौन अच्छी ना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ठीक अच्छे थर्ड कौन अच्छी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ कौन ना ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक अच्छे गोटे है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर तापर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तापर ऑस्मोटिक प्रेशर ये चार्टा भी गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ठीक अच्छे क्या अंडर आस ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अंडर ठीक अच्छे बुझीगला ना बुझीगलानी द्वितीय जिनस तुम था नेक्स्ट क्वेश्चन जा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे कौन भेंट फैक्टर भेंट फैक्टर कौन देखिए ताले नेक्स्ट क्वेश्चन कौन भेंट फैक्टर ताले देखिए चलो ना कौन ना सम solutes some solutes in their solution in their solutions so abnormal colligative properties it is due to association or dissociation it is due to association or dissociation of the solute it is due to the association or dissociation of solute in the solution ठीक है भेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस्ड भेंट फैक्टर introduced a factor I and factor introduced factor I to account for the extent of association or dissociation vector introduce a factor I to account for the extent of association or dissociation of the solute taking place in the solution यार एक्सप्रेशन कौन आसवन I equals to observed value of colligative property divided by normal value of colligative property किंबा तुम आउट कह I equals to
normal molecular mass divided by observed molecular mass. In case of association, ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଆସୋସିଏସନରେ ଏଇଟା ଏପଟେ ଲେଖୁଛି ହେଲା, ଆସୋସିଏସନରେ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତମର ଭେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 1 ଆସିବ। ଯଦି ଡିସୋସିଏସନରେ ଦେଖିବ ତମର ଭେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 1 ଆସିବ। ଏଇଟା ବି ତଳେ ମେନସନ୍ କରୁଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। Some solutes in their solution show abnormal colligative property। ଆମେ colligative property କ'ଣ ବୋଲିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କରୁଛି ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିମ୍ବା ତାର ନମ୍ବର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତାକୁ ହେଉଛି colligative property। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଲ୍ୟୁଟଟା କିଛି abnormal behavior ଦେଖାଉଛି colligative propertyରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅର୍ ଡିସୋସିଏସନ୍, ମିଶିଯିବା କିମ୍ବା ତାର ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କିଛିଟା abnormal behavior ଦେଖେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରା ନା ଭେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାହାକୁ ନା ଆଇ। ଏଇ ଆଇଟା କ'ଣ ନା ଆଇ କ'ଣ କରିବ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମାନେ ଦେଖିବ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବ। କ'ଣ ଦେଖିବ ନା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅର୍ ଡିସୋସିଏସନ୍, କେତେ ପରିମାଣର ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଉଛି କେତେ ପରିମାଣର ଡିସୋସିଏସନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଆଇ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଇର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ଅବଜର୍ଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ colligative property, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଅବଜର୍ଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଅଛି ସେଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଅବଜର୍ଭ କରୁଛେ, ଆଉ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ନର୍ମାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ colligative property, ନର୍ମାଲି କ'ଣ ରହିବା କଥା ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଡିଭାଇଡ଼ କରିବ ତାହେଲେ ପାଇଯିବ। କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ କରିଦେବ, ନର୍ମାଲି ତାର ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ଯାହା ରଖେ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ଅବଜର୍ଭ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ଯଦି କରିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମର ଭେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଯଦି ବୁଝି ନେବାରୁଛ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଶୁଣ। ତମର ଏଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୟାର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେଉଛି ମିଶିଲେ, ମନେକର ଇଏ 2 ଅଛି ଇଏ 2 ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 2କୁ 2ରେ ମିଶିଲେ କେତେ ଆସେ ନା 4 ଆସେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 2କୁ 2 ମିଶାଇଲେ 4 ନ ଆସିକି ଆସିଲା ମନେକର 4.5 ଆସିଲା କିମ୍ବା ଆସିଲା 3.9 ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କି? ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆବନର୍ମାଲ ବିହେଭିଅର। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିଶୁଛି, ଦୁଇଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ସଲ୍ୟୁଟ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଶୁଛି, ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆସୋସିଏସନ୍ ଡିସୋସିଏସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇପାରୁନି, ମାନେ 2 ମିଶିଲେ 4 ଆସୁନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କିଛି ଅଲଗା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଉଛି। ଯେ ଅଲଗା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛି ନା ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଉ ଡିସୋସିଏସନ୍ ଯୋଗୁଁ। ତାହେଲେ ସେ କେତେ ପରିମାଣ ଦେଉଛି ସେଇଟାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଭେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଇକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା, ବୁଝିଗଲା। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା। ବାକି ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା ଆମେ, ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରର 2-3 ମାର୍କ ଆମେ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପଢ଼ୁଥାଅ ଭଲରେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଅ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାଅ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେବ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।